Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. This is Tariq. In the previous lecture we were learning about the power rule, that what is power rule and how we can estimate the derivative of the function including exponent or power. We discussed in English, but we did not repeat the last example power rule in Dari, so I am again repeating in Dari that power rule यानी वो फंक्शन या वो फंक्शन हा कि दरू एक्सपोनेंट पावर या तवान बाशा खुद डेरिवेटिव वो चतुर बायद गरफ्ता शवा मुश्तक गिरी वो फंक्शन की तवान दारा मुश्तक गिरी वो चतुर शवा खुमा در تیر لیکچرم گفتم که او فنکشن که اکسپوننت یا پاور یا توان داره مشتق گیری و ایطور شوا که او توان او باید در ضریب نوشته شوا از او توان یک منفی شوا. یہ طریقہ کار است. باید ترتیب مشتق گیری شوا مشتق گیری فنکشن. مثلا ما اینجا یک فنکشن دادم स्टैंडर्ड फॉर्म y बराबर ब x बतावानी n. ये n क्या इरे तवान या एक्सपोनेंट या पावर मेगा. ये डिपेंडेंट वेरिएबल y है, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल x है. अगर इतुर फंक्शन है कि वो पावर दारा तवान दारा वो चतुर मुश्तक वो चतुर गरफ्ता शो. खुमा इंजा नविश्ता कदम कि बायद मा ये तवान कियास इरा आज बाला पाइन ब्यारम इंजा दर जरीब फंक्शन नविश्ता कुनिम. इंजा फंक्शन x बतावाने एनस n बायद पाइन ब्यारम दर हालत जरीब नविश्ता कुनिम और आज ये n यक मनफी कुनिम. ये पावर रूल है. ये पावर रूल मुश्तक गिरी है कि बायद तवान रा पाइन दर हालत जरीब नविश्ता कुनिम और आज तवान यक मनफी कुनिम. मसलन ये मा आज बई फंक्शन मुश्तक अजी फंक्शन मुश्तक में गिरिम या मुश्तक गिरी में कुनिम ख्वावल खुमा अलामाइड सिंबल डेरिवेटिव बतरफ चप हम अप्लाई करें d over dx of y. ये बई माना कि तगीर दर y बवजह तगीर दर x और बई तरफ हम अलामाए डेरिवेटिव अप्लाई करें d over dx. आले मुश्तक गिरी चितूर मेशा अगर फंक्शन तवान दारा खू तवान बायद पाइन ब्यारम दर हालत जरीब फंक्शन नविश्ता कुनिम. ये n दर हालत जरीब नविश्ता कुनिम. जरीब शुमा में फहमें कि हर वो अदद या हर वो अलामा के दर जरीब फंक्शन दर जरीब मजहूल वजूद दारा उर जरीब में गया वो अलामा या वो साबित अदद के कत मजहूल अस तरफ चप मुंसलिक बाशा हो. ये n मा इरा पाइन आवर्दम और आज n यक मनफी करें. ये तरीका मुश्तक गिरी है अगर फंक्शन एक्सपोनेंट या तवान दारा. हाँ दोबारा में महसिलात महसिलीन अजीज कि मा बायद इन र पाइन ब्यारम इंजा दर हालत जरीब नविश्ता कुनिम और अजी पावर अजी तवान अजी इन यक मनफी करिम हो. इन र मा नविश्ता कदिम इंजा और आज इन यक मनफी कदिम. ये मुश्तक गिरी शुद मुश्तक गिरी फंक्शन की वो तवान दारा. आले मा यक एग्जाम्पल इंजा दोबारा स्पेसिफिक मुशख्खस एग्जाम्पल में गिरिम. फॉर एग्जाम्पल y is equal to x बतावानी दो. ये फंक्शन दो मजहूला दारा यक डिपेंडेंट मजहूल y यक इंडिपेंडेंट मजहूल x और ये पावर रूल अप्लाई में चेरा कि फंक्शन इंडिपेंडेंट मजहूल x किया सो एक्सपोनेंट पावर या तवान दो दारा. खु सवाल ये में कुना कि मुश्तक ये फंक्शन मालूम को dy तकसीम dx मालूम को
ये علامه डेरिवेटिव शुड खुमा फंक्शन दोबारा नविश्ता करें y बराबर बा x मुरब्बा आले अप्लाइंग डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड मा बायद बतरफ चप हम डेरिवेटिव अप्लाई करें बतरफ रास हम अप्लाई करें d ओवर dx ऑफ y या dy तकसीम dx बराबर ब d तकसीम dx ज़रब x मुरब्बा यानी बेईमाना कि मा मुश्तक बतरफ चप हम अप्लाई करें बतरफ रास हम अप्लाई करें मेरे आले मुश्तक चितूर बायद बिगिरम बायद ईदूरा अस्तवान पाइन बियारम दर्जे जरीब नविश्ता कुनिम दर हालत जरीब नविश्ता कुनिम आज दू यक मनफी कुनिम खुमा ये कार कदम दूरा इंजा दर हालत जरीब आवर्दिम आवाज दू यक मनफीम कदम खुद डीवाई तकसीमी डी एक्स ची शुद बराबर ब दू खुदेश आज एक्स बतावानी यक चितोर चिरा शुद चिरा की आज दू की यक मनफी कदम एक्स बतावानी यक में माना और डी वाई तकसीमी डी एक्स बराबर ब दू एक्स नविश्ता करें खो ये डेरिवेटिव शुद वक्त के फंक्शन तवान पावर या एक्सपोनेंट द्वारा constant times function. This is another rule number 3rd, that if the function carry constant number, if there is any constant involved in the function, if there is any constant attached to the function from the left hand side, constant times derivative of the function, constant time function means that when the function include to the left of the function any constant, so that function is called constant times function. Times mean constant value, zarab function, constant value times mean constant multiplied with function. So how to take its derivative? We will take the constant outside and times derivative of the function. We will keep the constant outside and we will apply derivative on the function only. So dear student, constant times function baimana ki when the function include any constant. So how to find its derivative? We will take the derivative, the constant value, the constant symbol outside, and we will apply derivative on the function only, and we will write constant times derivative of the function mean constant will be in the multiplication form with the given function. Let me further clarify by putting one example. Constant times function, this means constant times derivative of the function. Times means constant is in multiplication form with the function. So we will not apply derivative on the constant because derivative of the constant is 0 and it will change the total function to 0. So we will take this constant outside and we will apply derivative only on the given function. I am clarifying by putting one example. For example, y is equal to c times f of x. This c is in multiplication form with the function f of x, where f of x is the given function, where c is any constant value, which is any constant number, its value is unknown, value is not given here, this is standard form. So y is equal to c times f of x. This constant c is in multiplication form with the given function f of x. So that is why we write over there that constant times derivative of the function, and I told you that in here constant is involved. We will take the constant outside and we will apply only derivative on the function which is given. So y is equal to c times means c multiplied by c zarab f of x, where c is any constant. So how to find the derivative of the function like this? Y is equal to c f of x, where constant is also involved. So y prime, sorry, this is the dy over dx. Here dy or d over dx is missing, dear students. We applied derivative in here. So dy over dx is equal to, I take this c, which is any constant, which is a symbol for the constant. I write this outside.
and I find the derivative of this function only. I apply derivative on the function only, so I write f prime of x. I told you in the very beginning of this chapter that y prime is also the symbol of the derivative. Y zabar or y prime is also the symbol of the derivative, means we find derivative. So in here, f zabar or f prime means that we find the derivative of the given function f of x. So it means how when the function involve constant, so we will take the constant outside and we will just apply derivative on the given function. So I am putting the constant outside and I am applying derivative on the function only, so f prime of x. For example, y is equal to 5x. This is dependent variable y of the function, x is independent variable of the function, and 5 is any constant. Now this is constant times function, the function which include constant value 5 as well. So how to find its derivative? We will take derivative of both sides. So I am applying d over dx of y or dy over dx. I am applying derivative on the left hand side of the function, and I am applying derivative on the right hand side of the function. So d over dx of y या dy over dx barabar but d over dx of 5x. Now this 5 is constant. So I put a note taking the constant outside, apply derivative on the variable x only. So I am taking this 5 outside from the symbol of the derivative. I take this 5 from inside to outside. And now I am applying derivative symbol on the function x only, d over dx of x. I am again repeating, this is d over dx of 5x, but I take this 5 outside here. And I am applying derivative on the x only, so d over dx of x. Now dy over dx is equal to 5 as it is. This is a constant value. This is coming as it is. And derivative of the x with the power 1 will always be 1. Keep in mind, students, derivative of the constant number is always 0. And derivative of any variable with single power, the derivative of the variable majhul with single tawan, with one tawan, always will be 1. So I write derivative of the x with power 1, 1, and 5 zarb 1 is equal to 5. So this is the derivative of the function. Ma ira dobara dar zubani dari wazeh mein kunim constant times function. Ye baimana ki wo function ke function در پهلوی خود یک کانستنت علامه یک کانستنت عدد هم می داشته باشد او را کانستنت تایمز فنکشن میگن. تایمز اینجا به معنای ضرب که یک کانستنت عدد در حالت ضرب در حالت ملتیپلیکیشن یا در حالت ضرب نوشته است که فنکشن، یعنی کانستنت عدد در حالت ضرب است که فنکشن و کانستنت تایمز derivative of the function. اگر function یک ثابت عدد یا یک ثابت علامه داره، خب مشتقگیری یه function باید چطور شود؟ و constant باید بیرون نوشته شود، بیرون از function کشیده شود او مشتقگیری function یعنی مجهوله شود. خب به این وجه ما نوشته کردیم constant times derivative of the function، یعنی ما constant را بیرون در حالت ضرب نوشته کردیم او ضرب مشتقگیری function کردیم. مثلا یہ ایک example است. For example y برابر با c ضرب f of x، یہ constant times function است. یہ y dependent مجهول است، x independent مجهول است، f اسم نیم فنکشن است او c یک ثابت عدد است که در حالت ضرب نوشته است. خب c چی است؟ علامه ثابت عدد است که فعلا او عدد معلوم نیست. یه c در حالت ضرب نوشته است
भाई वजह फंक्शन गुफ्त हमेशा कांस्टेंट टाइम्स फंक्शन यानी कांस्टेंट ضرب फंक्शन आले मुश्तगिरी ये चतुर इम्कान दार वाई प्राइम या dy ओवर dx बराबर बची में शबायद मा ये साबित अदद सी के एस इर बैरून बकशम और मुश्तक फंक्शन एफ ऑफ एक्स बिगिरम भाई वजह मा सी ضرب एफ प्राइम ऑफ एक्स नविश्ता करें एफ प्राइम ची माना ये अलामा मुश्तकस एफ जबर बची माना ये अलामा मुश्तकस के मा मुश्तक ये फंक्शन एफ ऑफ एक्स गिरफ्त मिंजा एफ प्राइम ऑफ एक्स बची माना ये भाई माना कि मा मुश्तक ये फंक्शन एफ ऑफ एक्स गिरफ्त ये डेरिवेटिव ये मुश्तकस एफ प्राइम ऑफ एक्स खुशी दर हालत ज़रब नविश्तास कत डेरिवेटिव हम वो मतलब ये कि कांस्टेंट टाइम्स फंक्शन की अगर मैं आया खुबायद मा कांस्टेंट बैरून बकशम और मुश्तक फंक्शन बिगिरम मा यक मुशख्खस एग्जांपल इंजा वज़न में कुरिम y बराबर ब 5x y बराबर ब 5x इंजा ये कांस्टेंट टाइम्स फंक्शन है यानी साबित अदद 5 दर हालत ज़रब कत फंक्शन नविश्तास अगर इतुर फंक्शन में आया खुबायद चितुर मुश्तक गिरी शवा टेकिंग डेरिवेटिव ऑफ बोथ साइड मा अवल खुबायद तरीक़ेकार चितुर पेश बुबरम मुश्तक अलामा मुश्तक बतरफ चप हम नविश्ता कनेम dy ओवर dx या d ओवर dx ऑफ y और बतरफ रास्त हम बायद नविश्ता कनेम d ओवर dx ऑफ फंक्शन 5x खु इंजा दर हालत दर फंक्शन यक साबित अदद हम करार दारा ये साबित अदद 5 बायद मा बैरून बकशम ब 5 बायद मा मुश्तगिरी न कुनिम चेरा के मुश्तक कांस्टेंट साबित अदद 0 अस हुकुल लगी फंक्शन 0 मेशा भाई वजह टेकिंग द कांस्टेंट आउटसाइड एंड अप्लाई डेरिवेटिव ऑन द फंक्शन ओनली मा बायद साबित अदद 5 रा बैरून बकशम ये की इंजा कशीरिम ये बैरून बरामद आज दाखिल ये 5 रा कुजा कदम इंजा आवर्दिम बैरून इंजा नविश्ता करें और d ओवर dx से फंक्शन x मी गिरे माले यानी मा मुश्तगिरी बे मजहूल में कुनिम साबित ना साबित रब बैरून कशीदिम खो मुहस्सिलीन व मुहस्सिलात अजीज ज़माने के शुमा यक मजहूल दारिन और बुलंद तरीन तवानी वो मजहूल यक बाशा खो मुश्तक वो मजहूल की तवान यक दारा हमेशा बतौर उमूम यक में बाशा भाई वजह मा मुश्तक x बतावानी यक इंजा यक नविश्ता करें d ओवर dx ऑफ x इज इक्वल टू 1 मा दोबारा रिपीट में करें मुहस्सिलीन व मुहस्सिलात अजीज हर वक्त के मजहूल शुमादारिन और बुलंदतरीन तवाले व मजहूल यकस खु मुश्तक वो हमेशा यक में बाशा डेरिवेटिव वो मजहूल की तवान यक दरा हमेशा यक में बाशा भाई वजह मा डेरिवेटिव x बतावानी यक नविश्ता कदम 5 ज़रब यक 5 बराबर ये डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन शुड डेरिवेटिव ऑफ द एनी वेरिएबल विद पावर 1 इज ऑलवेज 1 हर मजहूल की बुलंद तरीन तवान यक दारा मुश्तक वो हमेशा यक में बाशा दिगर रूल सम आर डिफरेंस ऑफ द फंक्शंस यानी अगर दर फंक्शन आज यक ज़्याद टर्म्स अस आज यक ज़्याद कंपोनेंट्स अस आज यक ज़्याद हिस्सास मसलन दो terms as say terms as okay let me first discuss in English some are difference of the functions yani those functions in which those functions in which we have more than one terms in which we have more than one components parts like one term like we have 2 terms 3 terms 4 terms and we have some plus value plus sign or minus sign in between the terms in between the components means the function
including more than one terms as well as including both plus or minus signs. So how to find the derivative of the function like this? Like for example, y is equal to f of x plus minus g of x. So this is the function which include two terms, two components, two parts. First is f of x in the plus sign, second is g of x, or y is equal to first term f of x minus second term g of x. So when we have the function including more than one terms and signs, may be positive, may be negative, so how to find its derivative? So very simple. Derivative procedure is the same. But in here, only keep in mind that we will apply derivative on all terms of the function, on all parts of the function. So for example, let me write the standard form derivative. I am applying derivative on the left hand side y. So dy over dx or d over dx of variable y is equal to, I am applying derivative on the function as well, but I will take the derivative of the first term plus minus खुदिश derivative of the second term. Yani the function where we have more than one terms, we will apply derivative on each term individually. We will apply derivative on the first term, derivative on the second term, derivative on the third term, on fourth, and so on and so on. So in this function we have only two terms, and I'm applying derivative on both terms one by one. So I'm applying d over dx derivative of on the first term f of x plus minus as it is, and d over dx of g of x. So the function in which we have more than one terms, we will take the derivative of each term individually. So for example, find the derivative dy over dx of the function if the function y is equal to 2x plus 3x squared. This is the given function. Y is equal to 2x plus 3x squared, and I have to find its derivative. I have to take its derivative because the question is find dy over dx. So we will apply derivative on the left hand side dy over dx, and apply derivative on the right hand side d over dx of the function 2x plus 3x squared. So apply derivative on both sides. Now dy over dx is equal to, we will apply derivative on the each term one by one. So d over dx of the first term 2x plus as it is d over dx of the second term 3x squared. And now we study the power rule, we study the constant times function, how to find its derivative. So dy over dx is equal to 2. I'm taking this constant, this is constant times function that we studied before this. Constant 2 is in multiplication form, so I'm taking outside. And I'm applying derivative on the x with the power 1. Plus in here 3 is constant, I'm taking outside, and d over dx of the x squared. So 2 as it is, and derivative of the x with single power always 1 plus 3 as it is, and we will apply power rule. Take this power down to the zarib and subtract 1 from the power. We have dy over dx is equal to 2 plus 3 as it is, and 2x 2 minus 1. So dy over dx is equal to 2 as it is plus 3 as it is, 2 minus 1, 2x raised to the power 1, and x raised to the power 1 is equal to x. So dy over dx is equal to 2 as it is, 3 multiplied by 2, 6, and x raised to the power x. So this is the derivative of the function 2 plus 6x. Ma'ira dobara dar zubani dari wazih mein kunim ke, okay, we will repeat in Dari in the next lecture because the video time is expanding and then it create problem in uploading. So the derivative dy over dx we find out 2 plus 6x.